सेशन फिर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव डिस्कस द एल्गोरिथम फॉर, जस्ट रिमाइंड मी है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास इटसेल्फ। आज तो ज्यादा छूट गया। चलो इट्स फाइन। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सीन द एल्गोरिथम फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड वी हैव सीन जो पहले काम किया था। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्रिएट द स्टैक। द सेकंड स्टेप इज for each character t in the input I'm counting or I'm saying everything in the input as a character t. I'm saying operand also as a t, I'm saying operator also as a t. So for every t in the input, the first case is if t is the operand, you will directly print t. Else if t is a right parenthesis, okay, then you keep on popping the stack and outputting the tokens or operators. Here when I say tokens, it means whatever is inside the stack. So technically tokens here means only the operators itself, right? When I say tokens, it simply means whatever is inside your stack. So technically it means operators only, right? And those operators which are inside the stack. So if you see a right parenthesis, you keep on popping the tokens and outputting them until you see a left parenthesis, right? So you pop that left parenthesis also, but you don't print that. Else, final else means operand is over, right parenthesis over. So either I'm seeing a operator in my input or I'm seeing a opening brackets in my input. Okay, so either I see a operator or I see open brackets. I have to push it on the stack. So first I will make sure either the stack is empty or the top of the stack is of lesser priority compared to the operator that I'm trying to push. Okay, so if the top of the stack is not of lesser priority, I will keep on popping the top of the stack and output that also, right? And when top of the stack becomes of lesser priority, I will push that token on this stack or that operator on this stack. Now is it over or anything is remaining? Is the algorithm over? क्या बचा? What is remaining? Suppose this was my input string and I have reached the last point. Now what to do? Pushing me, popping, Kishant. Popping. Popping. Don't confuse the words. Popping. So when you parse the input once, when you scan the input once, and when you reach the last step, you have to pop and print whatever is left in the stack. Whatever is left in the stack, you have to directly pop that out. Okay, so the last and the final step C is pop and output all the tokens until stack is empty. Until stack is empty. That's it. This was the algorithm to convert infix to postfix. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके बाद में खुद से ट्राई करना हाउ यू कैन कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, हाउ यू कैन कन्वर्ट प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स. सेम एल्गोरिथम, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन. सब में स्टैक यूज होना है, बट नाउ यू हैव टू सी दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बट यू शुड आल्सो ट्राई एंड प्रैक्टिस कि हाउ यू कैन कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, हाउ यू कैन कन्वर्ट प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स तो चलो नहीं कर लेना, चलो एक बार ट्राई करके देखना. ठीक है, नहीं आएगा देन जस्ट आस्क मी. सेम थिंग यू हैव टू डू. If you think logically, here if you are comparing, the top of the stack should be of lesser priority. What should you compare there? This is the main question. Okay, so you try that afterwards. But right now, you solve this question first. And don't solve it roughly, solve it using that 4 columns I've given you yesterday. Say x to the power. Okay, power symbol can be written something like this also, which I have told you yesterday, or we can write power symbol like this also. Okay, both means the same. In the exam you will not be told that what this symbol is, so you should know. Okay, this also means power and that also means power, arrow wala.
say divided by 5 into z plus 2. ठीक है, ऐसे करो, convert this using the same algorithm, but don't do it roughly, do it, देखो, whenever you are getting such questions ना, the first best way is first you convert it manually तो तुरंत convert कर लोगे ना, first you convert it manually so that after performing the algorithm you can get an idea that whether you have done it right or not. If you try to convert it manually, what will be the answer? करो चलो, you have 10 minutes, then we will discuss. Okay, manually पहले कर लो, and then you create those 4 tables, that 4 columns, and then you solve it step by step using the stack. Clear? You have 10 minutes, do it quickly, then we will discuss the next algorithm, that is postfix evaluation.
Sorry, Karthik, I didn't see the message. What you're saying? Okay. So nothing. It was first. You have to create a stack. Then the second was, if suppose t is an operand. पहले तो loop चला लो. First you run a loop for each character t in input. Then inside this for loop, if t is an operand, you put t. Else, if t is a right parenthesis. Okay, I have made a symbol like this, but you should write right parenthesis in full. Okay, then if it is a right parenthesis, you keep on popping, pop and output. आउटपुट भी ऐसे मत लिखना एग्जाम में, राइट OUT PUT मैसेजिंग वाला आउटपुट मत लिखना, फुल आउटपुट लिखना. पॉप एंड आउटपुट tokens until our left parenthesis is popped, but don't output it. Don't output this left parenthesis. I think till this point we haven't recorded, right? इसके बाद वाला तो record किया है step. Okay. Shall I rub it? X y power 5z sorry into 2 plus yes money, right? Correct. So have you done it? Sorry, everyone. So first, always whenever you are seeing such questions, it's better you do the manual work. Okay, how manually it will be converted. So obviously, in this whole arithmetic expression, this bracket is having a higher precedence. Okay, so first bracket will be evaluated. So that will be 5z multiplication plus 2. Now this whole thing is a operand, right? Now this whole thing is a operand. And now in this expression, the highest precedence is for this power. So power will be converted. So x, y power divided, this whole thing is a operand, 5z star, this whole thing is a operand, plus 2. Now only divide and plus are remaining. So amongst divide and plus, obviously divide is having a higher precedence. So this will be x, y power 5z star divide plus 2. Now this whole thing is a operand 1 for plus, and this whole thing is a operand 2 for plus. So simply x y power 5z star 2 plus. Divide 2 plus. Correct? So this is a manual work, how manually we have converted. Now you try to do the same thing with the help of the algorithm. Okay, so I am doing the rough work of this stack, but you should write in the table format which I have given you yesterday. If you are solving these questions on Blackboard, then definitely you can do this shortcut. And this is not a shortcut, this is just a rough work. Okay, you can do this, but when you are writing for your end semester examination, the theory paper, you have to write it cleanly. So again, you start scanning the input from left to right. I see a operand, I will print it. I will increment the input pointer. I see a power function, I have to push this power function on this stack is empty, so definitely power function will be pushed. I increment the input pointer, I see a y is a operand will be printed. I see a operator, that is divide. Now this is left side, this is right side, this is left side, this is right side. वैसे मैटर नहीं करता इतना because power is obviously having a higher precedence. So power and divide is compared. किसका precedence ज्यादा है? Power का precedence ज्यादा है. So can divide go and sit on power? No, right? Divide cannot go and sit on power. So what you have to do, you have to make space for divide. So power को यहाँ से pop करना पड़ेगा.
So you have to pop and print power function, and then the space is created for this divide, and now divide can go and sit happily inside. Okay, again we will increment the input pointer. See, the beauty of this algorithm is sometimes you will feel this is much easier compared to your manual work also. Okay, because at one parts only, एक बार खाली input पढ़ना है from left to right, it will be converted directly into postfix expression. You don't even have to come back. ना ही आपको कितना दिमाग लगाना है कि किसका प्रेसिडेंस क्या है, वो ऑन द स्पॉट पता चल जा रहा है, right? So now I see opening brackets. I want to push opening brackets inside. Okay, अब देखते हैं push हो पाता है कि नहीं. So inside left side I have divide, right side I have opening bracket. किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा? Opening brackets का, right? Left side I have divide, right side I have opening brackets. Which is having a higher precedence? Opening brackets. So definitely a bigger person can sit on a smaller person. I can push opening bracket inside like this. Again I increment the input pointer. I see a 5. 5 is the operand, 5 will be printed. I increment the input pointer, I see a multiplication. I want to push multiplication inside. Let's see push हो सकता है या नहीं. So left side I have opening bracket, right side I have multiplication. Obviously multiplication is having higher precedence. So multiplication will be pushed. Multiplication will go and sit happily over opening brackets. I increment the input pointer, I see a Z. So Z is the operand, Z will be printed. I increment the input pointer, I see a closing bracket. So whenever you see a closing bracket, you have to keep on popping and outputting the tokens until you see a opening bracket. So सबसे पहले multiplication pop होगा and print होगा. Then opening bracket भी pop होगा but print नहीं होगा. So this is the current status. And then I increment the input pointer, I see a plus. I want to push plus inside. Definitely divide का precedence ज्यादा है. You cannot push plus inside. So plus के लिए जगह बनानी पड़ेगी. You have to pop divide. So divide बाहर आ जाएगा pop होके, and plus अंदर चला जाएगा. Plus will go inside and sit. I see a 2. 2 is the operand. 2 will be printed. Then I हो गया सारा input string. When the whole input string is over, whatever is remaining in the stack, you have to pop it out and print it. So plus will be printed. So this is my postfix expression. Clear without? Clear? Now we will see the next thing, that is postfix evaluation. Directly evaluating postfix expressions using stack. Pretty easy topic, not at all tough. Suppose I give you a, first let's take an input expression, say 3 plus 2 into 1. क्या आंसर होना चाहिए इसका? 5, right? The answer should be 5. Now suppose I convert this into postfix expression. इसका postfix क्या होगा? 3 2 1 star plus. This will be the postfix expression. Now suppose I ask you that you evaluate this postfix expression directly. Yesterday I have told you the time complexity thing. I have told you or not? See, one question arises, why अच्छा चलो इसके बारे में बात करेंगे, पहले बात ही कर लेते हैं. See, the main question comes, why we are doing all this thing. Okay, ये क्यों कर रहे हैं, infix to postfix क्यों कर रहे हैं conversion. And then now right now I'm saying you कि suppose you have converted infix to postfix, now you evaluate the answer of this postfix directly. हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं because suppose I give you expression like this, 3 plus 2 multiplication, say 2 plus 5. This is an infix expression. If I give the compiler this infix expression and ask it to evaluate this in one step, तो वो क्या करेगा? It will try to evaluate 2 plus 1 also, and at the same time it will try to evaluate 3 plus 1 also by coming back. उसको पीछे आना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा अगर एक साथ वो infix expression को evaluate कर रहा है, because the compiler have to move the pointer continuously to see किसका precedence कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है. This is the problem, right? कभी ब्रैकेट की वजह से यहाँ प्रेसिडेंस ज्यादा हो रहा है, कभी मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ प्रेसिडेंस ज्यादा हो रहा है. सो कंपाइलर हैव टू कंटिन्यूअसली मूव front and backwards in a case of a infix expression. So suppose I have total n symbols. N means total number of operators also, total number of operands also. Operators operands मिला के
जो टोटल लेंथ है एक्सप्रेशन की वो सपोज n है। सो मुझे हो सकता है फर्स्ट आई एम इवेल्युएटिंग दिस एंड एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग सी। अब जो मैं समझा रहा हूँ समझ नहीं भी आएगा तो इट्स परफेक्टली फाइन, बट जस्ट टू गेट यू एन इंट्यूशन, because this is not in our syllabus as per se, but you should get an intuition why we are doing this thing. So technically why we are doing this thing is because suppose अगर ऐसा नहीं कर रहे होते, अगर डायरेक्टली इनफिक्स एक्सप्रेशन को ऐसे इवेल्युएट कर रहे होते, if we were evaluating the infix expression like this, suppose ये लेंथ होती मेरी n ले लेते, n minus 1 ले लेते रफली, एंड सपोज ये लेंथ भी होती मेरी n minus 1, वर्स्ट केस में n is the total number of operators and operands. Now I'm saying you that compiler will evaluate both of these parts simultaneously, एक साथ करने की कोशिश करेगा। सो अगर एक साथ करने की कोशिश करेगा तो वर्स्ट केस में इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, प्लस every time I have to make a comparison, right? Every time I have to make a comparison to check। चलो कंपैरिजन वाला पार्ट भी हटा दो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे रुक जाओ। ठीक है, यहां तक ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। नाउ सपोज आई कन्वर्ट दिस इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अभी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स? सपोज दिस इज द एक्सप्रेशन a plus b into c, what could be the time complexity? Suppose worst case में एल्गोरिथम की लेंथ है n, एल्गोरिथम की नहीं, this expression, suppose in worst case I have the length as n, n is total, n includes operators also and operands also, सब मिला के worst case में n है। कितने ऑपरेटर्स मुझे स्टैक में भेजने हैं? ऑब्वियसली n से तो कम ही भेजने हैं ना, बिकॉज n ऑल्सो इंक्लूड्स ऑपरेंड्स। चलो वर्स्ट केस में n मान लेते हैं। आई एम पार्सिंग द इनपुट स्ट्रिंग ओनली वंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं इनपुट को एक ही बार देख रहा हूं लेफ्ट टू राइट, आई एम नॉट कमिंग बैक और एनीथिंग। सो वर्स्ट केस में मुझे ऑर्डर ऑफ n लगेगा, प्लस एवरी टाइम आई एम मेकिंग अ कंपैरिजन आल्सो, राइट? अगर कोई ऑपरेटर यहां पे आ गया तो उससे कंपेयर भी करना पड़ रहा है, स्टैक में कुछ पड़ा है, राइट? वी आर कंपेयरिंग द प्रेसिडेंस आल्सो ना। वर्स्ट केस में कितना लगेगा? हो सकता है मुझे हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कंपेयर करना पड़े, तो उसका लगेगा ऑर्डर ऑफ n। सो टोटल लगेगा ऑर्डर ऑफ 2n। ऑर्डर ऑफ 2n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n ओनली इन कंप्यूटर साइंस। ओके, अब बताओ ऑर्डर, अच्छा चलो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ n में। नाउ ये जो पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में बताने जा रहा हूं अभी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही लगेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही लगेगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज इफ यू आर डायरेक्टली इवैल्यूएटिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन, द टाइम विल बी देयर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, या इससे ज्यादा ही लगता है। बहुत डिटेल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इसकी एक्सप्लेन की है, बट इससे ज्यादा ही लगेगा। एंड इफ आई एम कन्वर्टिंग अ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एंड देन इवैल्यूएटिंग द पोस्टफिक्स डायरेक्टली, आई विल टेक ऑर्डर ऑफ 2n और ऑर्डर ऑफ n। क्या बड़ा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ n? विच इज ग्रेटर? किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बड़ा होता है, ऑर्डर ऑफ n बड़ा होता है? ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज बिगर, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस। समझ गए? इफ यू हैव गॉट द इंट्यूशन इट्स परफेक्टली फाइन, कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट यू शुड नो व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, so it's easy for the compiler. In our compilers also, whenever you write something like 3 plus 2 into 1, it is not that this is directly evaluated. First it is converted into postfix and then postfix is evaluated, because that takes less time. Depends from implementation to implementation, but in most of the cases. Fine. So now suppose I give you, I have converted this infix expression to this postfix expression using our previous algorithm. Now I ask you, you directly evaluate this. You don't, अब इसको वापस कन्वर्ट नहीं करना है इनफिक्स में और फिर आंसर लाना है, इसका मुझे सीधे आंसर चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? अगेन द स्टैक विल be helpful for us in this case also. It's a pretty easy algorithm, just pay attention. So what you have to do, again you have to, acha, this stack is known as a operand stack. In previous case, the stack was operator stack. This case, the stack is known as the operand stack. Why? Any idea? पिछले वाले को ऑपरेटर क्यों बोलते थे? Why we were saying the previous stack as operator stack? Because we were pushing operators there, right? इसको ऑपरेंड स्टैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑपरेंड जाएंगे, right? Fine. See, computer science is nothing but just a basic common sense. If you see, it's not a very complicated branch of engineering. If your aptitude is perfectly fine, it's a very easy branch to master, and then in future prospects also.
You will realize when you keep on reading more subjects, it's not, if your maths is perfectly fine, you will not face any difficulty here, neither in coding nor in any of the subjects. Now, what we have to do is we have to directly evaluate this postfix expression. Okay, again we have to start scanning the input from left to right. Whenever you see a operand, you push that on the stack. So I see a 3, I push 3 on the stack. I increment the input pointer. I see a 2. Again you push on the stack. Again increment the input pointer. I see a 1. Again push on the stack. Again increment the input pointer. I see a multiplication. Now a operator can be of two types. Either it can be a binary operator. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है. बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब है इट विल टेक टू ऑपरेंड्स टू इवैल्यूएट, और इट कैन बी अ यूनरी ऑपरेटर लाइक प्लस प्लस. प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर which take only one operand, right? Generally this evaluation is done with the help of binary operators only. Unary नहीं आते एग्जाम्स में, बट आएंगे तो सेम लॉजिक पे काम करेगा. सो नाउ आई सी अ मल्टीप्लिकेशन, राइट? आई सी अ मल्टीप्लिकेशन. विच काइंड ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन इज, बाइनरी और यूनरी? Multiplication is binary. So if you see a binary operator, you have to pop two elements from the stack. If you see a unary operator, you have to pop one element from the stack. So here I see a binary operator, that is multiplication. So I will pop sorry, I will pop two elements from the stack and I will apply this binary operator between them. दो element बाहर निकालेंगे और उनके बीच में ये operation perform करेंगे. Whatever the answer you will get, we will push it back again to the stack. So again, what I'm saying you is, if you see any operator and that is suppose a binary operator, so I will pop off two elements from the stack. दो element pop करेंगे, उन दोनों के बीच में is we will perform this operation. The answer will be 2 and we will push 2 back. इसका आंसर आएगा 2 और 2 को वापस पुश कर देंगे स्टैक में. We will again push the result in the stack. That is 2 will be pushed back. Now the only thing that you have to keep in mind here is स्टैक में 1 ऊपर था, 2 नीचे पड़ा था. 1 लास्ट में गया होगा, 2 1 से पहले गया होगा. तो logically 2 have to be operand 1 and 1 have to be operand 2. Yes or no? Because 1 बाद में गया ना, तो 1 operand 2 ही रहा होगा. 2 पहले गया है, so 2 must have been operand 1. तो इस चीज का ध्यान देना है. डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन और प्लस में फर्क नहीं पड़ता है, बट माइनस में फर्क पड़ता है. माइनस में फर्क पड़ता है. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कौन सा ऑपरेंड 1 है, कौन सा ऑपरेंड 2 है, राइट? सो आई हैव सीन अ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन वाज अ बाइनरी ऑपरेटर. सो दो एलिमेंट्स को बाहर पॉप किया, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, फाइनल रिजल्टेंट अंदर पुश कर दिया एंड आई विल इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर. I see a plus. Plus is again a binary operator. So again, I will pop two elements from the stack. Obviously, 2 last में गया है तो 2 is my operand 2 and 3 is my operand 1. आंसर आया 5. Again 5 को पुश कर देंगे स्टैक में, right? And when the input is over, whatever is remaining on the top of the stack is my answer. That's it. यही करना है. You know कि postfix expression में कोई ब्रैकेट्स नहीं दिखते हैं, so ब्रैकेट्स वाला कोई केस ही नहीं है. फाइन, इसमें और कुछ नहीं है. इफ यू वांट टू सॉल्व, एक एग्जांपल खुद से सॉल्व कर लो. हाँ, इसका भी एल्गोरिदम है, अभी लिखवाऊंगा. फर्स्ट यू सॉल्व वन एग्जांपल. यही एल्गोरिदम था वैसे, मन जो मैंने बोला इसी को अभी लिखेंगे इंग्लिश में. फर्स्ट यू सॉल्व वन क्वेश्चन. सपोज 3 plus 2 divided by 2 into 5 minus 4. सॉरी, करो.
What is the answer quickly? एनी पोस्टफिक्स में करने के बाद आंसर बताना है फाइनल. First you have to do this in postfix and then you have to tell the evaluation. So postfix में this will be 2 divide 3 plus 8 5 minus 4. Now this is the operand in itself, so 2 divide 5 multiplication 3 plus में आ रहा है, so 3 इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, right? So this is the postfix equivalent. Now we have to evaluate it. Same thing. I see a operand, I push it. I see a operand, I push it. I see a operand, I push it. I see a operator that is divide. Okay. So to perform divide, since this is a binary operator, I will pop off 2 elements from this stack. दोनों के बीच में perform करेंगे. Answer आएगा 1. 1 को वापस push कर देंगे. We will push 1 again on this stack, and I will increment the input pointer. I see a 5. 5 will be pushed. I see multiplication. So I will perform multiplication between 1 and 5. The answer will be 5, and again 5 will be pushed on this stack. I increment the input pointer. I see a plus. So again it's a binary operator, so 2 element pop होंगे, 5 and 3. Answer आया 8. 8 will be pushed on this stack. अब stack में खाली 8 बचा है. Again I increment the input pointer. I see a operand. Operand push हो जाएगा. Again I increment the input pointer. I see minus. अब देखो माइनस आ गया. 4 have to be on the right hand side. 4 बाद में गया है तो 4 is a operand 2 and 8 is a operand 1. आंसर आएगा 4. किसी को डाउट है? इट्स अ प्रीटी सिंपल एल्गोरिथम, इसमें और कुछ नहीं है. फाइन. इसका एल्गोरिथम लिख लेते जल्दी. सॉरी सॉरी. इसका एल्गोरिथम लिख लेते जल्दी से, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. वैसे कुछ नहीं, एल्गोरिथम सेम चीज है, बट स्टिल जस्ट क्विकली राइट इट. So first step is I'm speaking. Okay, you keep on writing. So first step is you have to scan the postfix expression or string from left to right. Okay, then second we have to create a stack, create an empty stack. Then for का loop लगाना है, but we can write repeat also. अभी इसमें लिखेंगे third point. Fourth point we can say if the scanned character is an operand, तो क्या करना है? You push it on the stack. अगर operand है तो push on the stack. ये हो गया fourth point. Now fifth point. If the scanned character
You will not be able to read what I'm writing on the screen because it's tough to write it fully. Okay, so you just focus on my words and you keep on writing. Okay, if the scanned character is an operator and if that operator is unary, then you pop one element, that is pop an element from the stack. And if the operator is binary, you pop two elements from the stack. इसी में continue करना after popping. Simply what we have done, you have to write in English normal. That's it. और इसमें कुछ नहीं है वैसे. After popping the elements, apply the operator between them. यहाँ पे लिख लो after popping the elements, apply the operator between them. And then final इसी में continue करना. Final push the result back on the stack. या फिर next step बदले को इसी में लिखो क्योंकि लूप के अंदर चल रहा है. Push the result on the stack. Right? और जो थर्ड पॉइंट खाली छोड़ा था इसमें यू राइट रिपीट, बेसिकली फॉर का लूप लगाना है. रिपीट स्टेप्स 4 and 5 टिल ऑल कैरेक्टर्स आर स्कैन्ड. ठीक, या फिर यहाँ कुछ नहीं मन कर रहा तो फॉर लिख दो. फॉर और ब्रैकेट्स में लिख देना टिल यू स्कैन द होल इनपुट. एनीथिंग यू कैन राइट. रिपीट स्टेप्स 4 and 5 टिल ऑल कैरेक्टर्स आर स्कैन्ड. जब सारा काम हो जाए and you complete all everything, the final step 6 is final result कहां पे होगा? Final result will be on the top of the stack. Final result will be on top of the stack. That's it. Clear? So with this, stacks is complete. In queues we have seen queue implementation using using arrays, right? Today I will upload queue implementation using linked list. You watch that. In the next class there is few modifications in queues like circular queue, DQ, etc. We will do that next week Tuesday, and then we will move towards our next module. ठीक है, चलो, थैंक यू. कोई डाउट है इसमें, किसी को पूछना है कुछ? ओके, थैंक यू.